Welcome to Rajya Sabha TV. You're watching a special show on Parliamentary Standing Committee. I'm Amritanshu Rai. In this show, we bring to you in-depth coverage of recommendations of the Standing Committee on the functioning of various departments and ministries. Today, we will talk about the Standing Committee's report on Ministry of Forest and Environment, a special report on the Forest Amendment Bill. Forest rangers will now be empowered to impose fine up to 10,000 rupees. The Standing Committee on Forest and Environment has approved of empowering forest officers. Currently, the officers cannot impose fines beyond 50 rupees on offenders under the forest law. As a result, most of the offenders are dragged to court even if charges against them are of petty nature, leading to delays in delivery of justice. Now, with the Standing Committee on Science, Technology, Environment and Forest agreeing to enhance the powers of forest officers, minor violations can be punished instantly with fines. For every forest range, there is a range forest officer, and each range consists of several circles which are in charge of foresters. And under each forester, there are forest guards who are the actual basic staff for looking after the protection of the forest. So now the authority has been shifted to fixed as range forest officer, and only they can exercise the power of compounding. The feature of the bill is to give a comprehensive amendment and for at the changing scenario of the economic scenario, and to save the dwellers. So to save the dwellers from the harassment of the forest persons. You know, there are several cases are pending, and the forest dwellers are reporting in the jail also. So we are concerned about that harassment to the dwellers of the forest should not be there. I would like to, through your channel, explain that the endangered species in India is actually the forest guard. There is no recruitment of forest guard happening. So we keep talking, you know, so in my state of Jharkhand, there is no forest guard. He is the actual endangered species. There should be 300 forest guard. In my constituency, there are only 25 or 30. So असली में, you know, अगर टाइगर को बचाना है तो फॉरेस्ट गार्ड को भी बचाने की आवश्यकता है. Most sections of the forest law enacted in 1927 have now become obsolete. The Standing Committee report tabled on 26 November 2012 says there is a need for comprehensive forest legislation. The report says that the proposed changes in the Forest Act are token in nature. The committee observed that the Forest Bill ignores the objectives of participatory management and the conservation of forest as emphasized by the National Forest Policy. The report says the forest laws need to be modified so as to make it compliant with Panchayat Extension to Scheduled Areas Law PESA Act and the Forest Rights Act, which grants right of habitation and self-cultivation to forest dwellers. The existing law treats these as offences. One of the biggest problem. See, look, the act might need amendment, etc., etc. is one part of it. I think what we need is quicker prosecution and quicker execution, more people in courts, you know. So every time we are complaining, thinking that the delay is because there is a lack of act. And actually the problem in the judicial system is everywhere you go. Public property is nobody's property. Therefore, nobody's property is everybody's property. That is what is happening. So, we want to bring in some type of control over the use of forest produce, at the same time taking into account the natural rights of the forest dwellers. Certain items there are absolutely necessary for them, and they cannot be prosecuted and harassed. And according to the report, hundreds of forest persons are caught and they are put in jail as under-trial prisoners. The committee felt that the mention of rank of ranger and above is appropriate. It noted that qualifying the rank of officer with monthly salary was unnecessary as it may complicate implementation.
The report also says no qualification of quantification for petty offences is needed and it should be left to the officer to decide. The committee recommends that the maximum amount for which compounding can be done should remain at 10,000 rupees, as anything beyond this may give wide discretionary powers to the officer. This will help reduce chances of misuse of law to exploit and harass poor tribals and other forest dwellers. I think Gram Sabha along with the forest ranger, so we said Gram Sabha along with forest ranger, will make judicial. Look, there's certain things like breaking red light. Imagine if you start cutting challans and asking to go to court, then murder, dacoits and all big criminals will escape. So I don't think so. Compounding is good in a modern society. I think immediate fine is a much more effective for large, and court should only be used for large offences. Forest dwellers have their own certain natural rights. So, for example, they have the right to cultivate the land, and if you want to cultivate the land, they want to require manure. And for manure, they usually, for example, I come from forest area, the manure what they use, cow dung is put in a pit and then leaves are spread, green leaves. So they go on one layer cow's dung and then one layer green leaves, and then ultimately they make it a manure and use for cultivation. And when you take the leaves for the purpose of further use, if anybody goes and prosecute them and file cases against them, it will be very difficult then. The committee said thousands of tribals and other forest dwellers are in jails under the forest law. The memorandums received by it allege that there are lakhs of such cases pending in courts. The Indian Forest Amendment Bill 2012 seeks to amend the Forest Law of 1927. The amendment seeks to empower forest officers to compound offences instead of taking the matter to courts for prosecution. The amendment is needed to grant relief to tribal communities and other people living in close proximity of forests from harassment or prosecution for petty offences committed sometimes even unknowingly. Standing Committee clearly recommends that the changes proposed in the Indian Forest Amendment Bill are minute in nature, and it requires complete revisit by taking care of existing forest-related laws. With camera person Shivi, Aruna Thakur, Rajya Sabha TV. The Standing Committee has objected to the benchmarking of salary of forest officers who can impose fine. I am joined by my colleague Aruna Thakur. Aruna, what did the committee say on the issue of benchmarking of salaries? Yes, Amritanshu. On this, the ministry replied that though the pay of the ranger officer varies from state to state, it is assumed that they are getting a minimum pay of 20,000 rupees. So the proposed compounding limit of 10,000 rupees in the bill is appropriate. We spoke to Pradeep Tamta, member, Standing Committee on Forest and Environment, and began by asking him the importance of forest rangers. देखिए, फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर फॉरेस्ट की अपर जो ब्यूरोक्रेसी है और जो लोअर स्ट्रेटा है उनके बीच में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी है। और ब्रिटिश टाइम में फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर बहुत बड़ी हैसियत में था, लेकिन समय के साथ उसकी भूमिका में बदलाव हुआ है, थोड़ा सा वो फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर कमज़ोर होता गया है। लेकिन आज और ये क्योंकि ये फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर स्टेट सब्जेक्ट में है, राज्य कहते हैं कि हर राज्य की अपने अपने आय के परिवेश से उसकी सैलरीज है। तो हमारा कमेटी का ये मानना था कि फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर तो ठीक है, उसको अधिकार के वो कमेटी सहमत है, लेकिन आप उसकी सैलरी को वो एक जो समय सीमा, जो सैलरी की हमने सीमा है, इसका कोई रैशनल आधार नहीं बनता है। डिजिग्नेशन बाय पोस्ट अगर इसको करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। बाय पे अलग अलग राज्यों में अलग अलग है, हमारे उत्तराखंड राज्य में उसकी अलग है। तो इसलिए उस संदर्भ में जब हम रेंजर को अधिकार दे रहे हैं तो उसमें हमारा कहना था उसी अधिकारी को ही मामला जाए, उसकी सैलरी के साथ उसके कंपाउंड को वो ना किया जाए। देखिए लेट अस होप सरकार क्या करती है। कमेटी ने अपनी सहमति जाहिर करी है, जो कि बिल में 50 रुपये से 10,000 की इन्हांसमेंट हुई है पेनल्टी में, लेकिन ये कमेटी की राय है। मैं आपका अपना निजी विचार इसमें जानना चाहूँगी। कानून फॉरेस्ट
वन कानून 1927 बड़ा लंबा है। उसमें कुछ संदर्भों में ये जो हमारी 1912 में फॉरेस्ट बिल में संशोधन का है, ये लोगों का कहना है, हम लोगों का कहना माइनर चेंजेज हैं और वो आज की आवश्यकता के हिसाब से भी आवश्यक भी है। 1927 में हमने किसी कानून के लिए, अगर वन अधिकारी के कानून के लिए कोई पनिशमेंट 50 रुपया निर्धारित किया हो, और आज जब फॉरेस्ट संपदा पर हर तरह से दबाव है, दबाव उन लोगों की ओर से जो फॉरेस्ट की तमाम तरह की स्मगलिंग से लेकर संपदा कर रहे हैं, तो उनके लिए मैं समझता हूँ कि इस इन्हेंस को बढ़ाना कोई बहुत वो नहीं होगा। तो एक प्रासंगिक है कि हमने जो 50 रुपये का जो है इसलिए कमेटी ने इस संदर्भ में बहुत ज़्यादा कि बहुत साधारण सा है। वन कानून बहुत ही पुराना कानून है जो कि अंग्रेज़ों के समय से चला आ रहा है, लेकिन कमेटी ने ये भी बोला है कि जो और इससे रिलेटेड जो वन कानून अभी हर स्टेट में हैं और चल रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं हमें रिविज़िट करने की ज़रूरत है। तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? आज के संदर्भ में अभी भी जो हमारा नेशनल इस समय फॉरेस्ट कवर है वो पूरे देश में 22% से ओवरऑल है, जिससे हम बढ़ रहा है, और हमारी जो राष्ट्रीय नीति है 33% है। बहुत से संदर्भ में चेंज भी हुए हैं, जैसे एक मेजर चेंज हुआ है 1980 का, दैट इज़ फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट चेंज हुआ है जो यूपी फर्स्ट में हुआ, जिसमें ट्राइबल फॉरेस्ट राइट एंड अदर फॉरेस्ट ड्वेलर राइट्स है, जिसमें कि जो वनों के अंदर हमारे जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं, प्लस जो जैसे हमारा उत्तराखंड राज्य है जो वी आर नॉट ट्राइबल बट वी आर फॉरेस्ट ड्वेलर्स, तो ये कानून के द्वारा जो वनों के आसपास रहने वाले लोग हैं या वनों के अंदर रहे, उनको बहुत मेजर राइट्स दिए गए थे। तो उनके संदर्भ में पंचायत राज एक्ट आ रहा है, तो इन संदर्भ में भी नए सिरे से पूरे फॉरेस्ट एक्ट 1927 को एक दोबारा से देखने की और परखने की ज़रूरत है। वी हैव टू रिविजिट द एंटायर एक्ट, ये कमेटी का मानना है। उसमें ये जो सारे क्लॉज हैं वो आ जाते हैं। जैसे हमारे वहाँ क्या है, जब फॉरेस्ट ट्राइबल राइट्स एंड अदर फॉरेस्ट ड्वेलर एक्ट लागू हुआ, तो जो उत्तराखंड और हिमाचल है, विशेषकर हमारे उत्तराखंड में, उसमें क्या कि 3 पीढ़ियों से अगर आपको कोई राइट है तो वो राइट आपको फॉरेस्ट राइट में इस राइट के अंदर कवर हो जाएगा, और देन देयर विल बी नो नीड फॉर द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, वहाँ लागू नहीं होगा। क्योंकि बहुत से डेवलपमेंट्स वर्क में हम कभी कभी कोई कानून बनाते हैं, अगर वो कानून छोटे से सामान्य विकास में बाधा बनने लग जाता, धीरे धीरे लोग उसी के आधार पर उस कानून पर प्रहार करने लगे। तो हमारे को कानून भी मिला, लेकिन उस फॉरेस्ट ड्वेलर राइट्स एक्ट हमारे वहाँ इसलिए लागू नहीं हुआ कि 3 पीढ़ी को आपने कहने के 75 सालाना राइट, और 75 साल के दायरे में आने की वजह से अब उसको कोई राइट वो कानून होते हुए भी उस राज्य में लागू होने की स्थिति में नहीं है। तो ये हम लोग भी सोचते हैं कि अगर ये जो राइट्स दिया गया अदर ट्राइबल के अलावा जो ऐसे ग्रुप से जो फॉरेस्ट में रहते हैं, जैसे उत्तराखंड की स्थिति है, उन लोगों को भी इसका अधिकार मिले, तो ये 75 साल का 3 पीढ़ी की जो सीमा रखेगी, इसको नए सिरे से विजिट करने की ज़रूरत है। सर, ग्राम सभा का जो व्यूज़ लेना है, कमेटी ने जाहिर किया है कि बहुत ज़रूरी होगा, क्योंकि इससे जो लोकल विलेजर्स हैं उनका कनेक्शन रहेगा फॉरेस्ट ऑफिसर से। तो इसमें आप कितना क्या समझते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए ग्राम सभा इन वन विभाग के लिए? जो उद्देश्य है इसमें कि ग्राम सभाओं की राय लेनी चाहिए, लेंगे, ये पॉजिटिव इसलिए है क्योंकि आजकल किसी भी तरह की अगर किसी भी फॉरेस्ट में अगर आप बना रहे हैं, अगर आप सेंचुरी बना रहे हैं या फॉरेस्ट पर्पस इसके लैंड को कहीं दूसरी जगह हैं, तो अल्टीमेटली गांव के लोग तो प्रभावित हो ही रहे हैं। लेकिन इसमें है कि उनकी राय तो ली जा रही है, लेकिन अल्टीमेटली फॉरेस्ट ऑफिसर की राय प्रिवेल कर रही है। तो कमेटी ने कहा है कि अगर आप ग्राम पंचायत ग्राम सभा से राय ले रहे हैं तो उस राय को ड्यू
जो महत्व होता है वो कंसिडरेशन दीजिए कि उसके आधार पर आप अपने निर्णय में सकारात्मक बदलाव लाइए। नहीं तो जस्ट से हो जाएगा कि ग्राम सभा की आपने राय भी ले ली और उनके राय को वो महत्व भी नहीं दिया, तो फिर ग्राम सभाएं सोचेंगे भाई राय देने का अर्थ ही क्या है। एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है और ज़रूरी इसलिए है कि बहुत से स्टेटों में जहाँ फॉरेस्ट के नज़दीक आसपास लोग हैं तो वहाँ पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के बीच में, गांव के बीच में क्लोज रिलेशन में, और उसमें कन्फ्लिक्ट भी है। जैसे हमारे क्षेत्रों में जो टूटी मोटी फॉरेस्ट प्रोड्यूस हैं, ट्राइबल एरिया में भी हैं, जिसको फॉरेस्ट डेवलपर्स एक्ट ने, ट्राइबल एक्ट ने हमको अधिकार दिया है। जो पुराने ज़माने का फॉरेस्ट राइट एक्ट है वो भी फॉरेस्ट के बीच में रहने वालों के लोगों को ट्रेडिशनल राइट्स है। जैसे हमारे वहाँ दैट इज़ नोन एज हक हकूक। हक हकूक मीन्स मैं उस ग्राम सभा में रह रहा हूँ तो एक ख़ास एरिया में जंगल में मुझे अपने जीवन की उपयोगिता के लिए, जैसे एग्रीकल्चर इंस्ट्रूमेंट बनाने के लिए, घर बनाने के लिए सरकार साल में कुछ लकड़ियाँ मुझे दी जाएंगे, पेड़ दिए जाएंगे। गांव के अंदर इस बात को लेकर के बहुत लंबे से जैसे कि ये 1927 में जब हमको सीमांकन ये किया गया था, आज पॉपुलेशन बढ़ गई, आज ज़रूरतें हमारी बढ़ गई है, तो इसको बढ़ाने की ज़रूरत है। उसी तरह अन्य के संदर्भ में जो गांव के अधिकारियों को या ट्राइबल्स लोगों को है कि माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस को जंगल से ला करके अपने सर लोड, हेड लोड में जो इंडिविजुअली ला सकते हैं उसको ले जाने का, बाज़ार में मार्केट में देने का अधिकार। ये बहुत सी चीज़ें हैं, इसमें कन्फ्लिक्ट भी है होता है। तो ऐसे संदर्भ में गाँव सभा, गांव के लोग में, जंगल के लोग में और फॉरेस्ट विभाग के बीच में एक समन्वय बनाना है। अगर उनमें आपसी समन्वय बना रहता है तो फॉरेस्ट भी सेव होगा। और ये हम सबको ध्यान में रखना होगा कि इस देश के जंगल जितने भी आज भी बने हैं सिर्फ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की वजह से ही नहीं, उनकी भी एक बहुत बड़ा रोल है। It's time for us to enter into a break. When we come back, we will tell you about the proposed consultation process with the Gram Sabha. Welcome back. The Standing Committee on Forest and Environment has welcomed the proposal to consult with the Gram Sabha before compounding of offences. The Standing Committee observed that the insertion of clause mentioning forest officer will consult with the Gram Sabha before compounding offence will not only ensure transparency in the process but also lead to participation of people through Gram Sabhas. This will also open an avenue for local villagers to have a say in the management and protection of forest and utilization of resources. If the views of Gram Sabha were taken into consideration, then apprehension of corruption is there and harassment of forest dwellers is there. So we urge upon the government to views of the Gram Sabha is a mandatory subject. So views of the Gram Sabha should be taken into consideration and for the proper implementation of the Forest Act. Consultation with the Gram Sabha means consulting with the local people is of utmost importance because they are the persons who know the value of the forest produce. The committee recommends that the clause to obtain views of Gram Sabhas should be rephrased by providing that the forest officer should also give due consideration to such views while passing orders. The committee apprehends that obtaining the views of Gram Sabha could delay the process of compounding of offences. So it recommends that the government should consider the issue and find a solution. The committee recorded its apprehension on the practical difficulty faced in obtaining views of Gram Sabha. It says the government should address these apprehensions before framing rules. My personal opinion is consultation with Gram Sabha is a nebulous body, indefinite. Therefore, it would be better consultation with a statutory authority like village panchayat. There is a procedural, I know, some in the different states have the different laws of the Gram Panchayat. I was also Sarpanch. I know in Odisha there is a law to convene the Gram Sabha. When we are convening, the Sarpanch is empowered to convene the Gram Sabha. And in this particular matter, I think it will be better
if the collector of the district will convene the Grama Sabha for this object to compounding the when compounding cases will be there, the ranger should write to the collector and collector should convene a special meeting for this purpose only, and the representative of the collector should be there also, and the range officer and the sarpanch should be there, all members of the panchayat there should be there also, then this will be a fruitful thing. The committee has recommended that the ministry should amend the relevant sections of the Indian Forest Act 1927 so as to make it relevant today. This is required due to changing in socio-economic conditions, changes in forest policy and directions of the Supreme Court issued from time to time. According to Standing Committee, taking views of Grama Sabha for compounding offence will not only ensure transparency, but by doing this, the local villagers will be well connected to forest management and protection issues. With camera person Sivi, Aruna Thakur, Rajya Sabha TV. The Standing Committee has also pointed out loopholes in the Forest Amendment Bill. I am joined by my colleague Aruna Thakur. Aruna, what did the committee say about the loopholes in the Forest Amendment Bill? As the ministry admitted that Indian Forest Act requires comprehensive review, but simultaneously it did not go ahead with it by giving up the reason that comprehensive change is quite complex and it requires consultation with various ministries and state governments. We spoke to TMS Ganapathy, member Standing Committee on Environment and Forest, and began by asking him the practical difficulties in the process of consultation with the Gram Sabha. Exactly, because there are practical difficulties to hold Gram Sabha with regard to this particular petty offence. Because the basis is why this amendment was brought is because there are nearly 3 lakh petty cases and thousands of people, especially the tribal people and socially backward, they are languishing in the jail. To remove this inordinate delay in the adjudication, this amendment was brought. Again, if it has to go to the Gram Sabha, what is the time limit you prescribe? Who is to convene, whether the forest officer or the village pradhan, or what is the opinion, whether he should accept it or not, or before compounding the offences, that should be accepted. If suppose the Gram Sabha varies from the allegation, then what should be the situation? This is a grey area which needs to be looked into. This we have suggested to the government. And other thing is, this is a piecemeal provision which the government seeks to amend because of the fact 1927 Act, Forest Act, is more of a British legacy and obsolete and doesn't suit to the present socio-economic situation prevailing in the forest region. And it is contradictory to the Pessoa Act and also the 2006, which gives certain rights to the tribals who are living in the forest area. That is Scheduled Tribe and Traditional Right Act 2006, which gives certain rights to the dwellers there, whereas that considered to be an offence in the Forest Act. What are the main recommendation of the Standing Committee on Indian Forest Act Bill? Well, it was a very piecemeal amendment which was sought by the government, parliament to look into the few provisions in the Forest Act of 1926, that is section 68, which in fact allows the officer, particular forest officer, to compound particular petty offences. So the old act was obsolete and outlived, therefore the amendment was sought. When there was a deliberation, there was certain express reservation by honourable members in the committee, a rank of a range officer. There were no issue on those things because various states follows different quantum. In some states it's 5,000, in some states 10,000. We wanted to, accept the proposal because of the fact that any quantum which you raise beyond 10,000 may lead to misuse by the officials and harassment towards the tribals. There are pecuniary offences, there are compoundable offences. Compoundable offence is enhanced in this bill, but the pecuniary offences penalty remain the same. Do you agree with this? This is the anomaly which we have pointed out.
The basic issue is there are certain rights which are considered to be rights under the Act, that is the Scheduled Tribe Forest Dwellers, Traditional Forest Dwellers Act, that is in 2006, where grazing of bamboo, they are considered to be right of the tribal or people who are dwelling there, whereas that is considered to be an offence in 1926 Act. This has to be removed unless there is a comprehensive amendment and change of the complete provision to be tuned in with the socio-economic situation. I don't think it will have a problem. This contradiction anomaly exists even now. That is our reservation now. But according to you, the committee has left out any point, if you think so? No, there is two pieces of small amendment which we had agreed to. As far as the Gram Panchayat, the subclass 4, we have suggested the government come out with a suitable way to see that the Gram Sabha, there is no delay, and also that the officer who is commanding the offences has to take the opinion of the Gram Sabha. This we have made it very clear. Committee had gone into it detail. Whereas the other area, we suggested that has to be a comprehensive amendment in the entire Indian Forest Act 1926. It's time for us to end the show, but before we end the show, let me leave you with the concluding remarks of Pradeep Tamta, member, Standing Committee on Forest and Environment. फॉरेस्ट की चोरी को रोकना सिर्फ फॉरेस्ट विभाग का भी काम नहीं है, ये इस समय हमारे देश का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है कि वन संपदा के दोहन के प्रति जो एक्सप्लॉयटेशन कॉमर्शियल लोगों के द्वारा हो रहा है उस पर अगर नहीं है, नहीं तो आपने देखा हो कि तमिलनाडु में कितना स्मगलर, जिसको चंदन के स्मगलर से कहा जाता है, हमारे वहाँ उत्तराखंड में एक मिस्टर सागर है, क्या है, उसका बड़ा भारी रोल है। और पूरे देश की विभिन्न राज्यों में फॉरेस्ट संपदा को चुने कि नियोजित गिरोह की तरह लोग एक स्मगलिंग का व्यवसाय चल रहा है। तो उस संदर्भ में कानून को कड़े करना समय की आवश्यकता है और वही संशोधन सरकार के द्वारा लिया गया और कमेटी भी इस मामले में एक राय थी। Thank you for watching Raj Sabha TV. We'll be back with a new issue and a new episode. Keep watching Raj Sabha TV.